हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको अपने यूट्यूब चैनल iTech वर्ल्ड में खुशामदीद। आज हम जिस वेबसाइट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो न सिर्फ ऐसी राइटिंग वेबसाइट है बल्कि उस पर डिफरेंट निशेस पे आप काम करके बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। आप उस पर डिफरेंट टॉपिक्स पे डिफरेंट आर्टिकल्स लिख सकते हैं, एकेडमिक ऐसे राइट कर सकते हैं। गोया कि हर शोबा ज़िंदगी में आप उस पर राइटिंग करके बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। ना सिर्फ राइटिंग बल्कि प्रूफ रीडिंग का काम मिलेगा, इवन के टीचिंग के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट टीच करके भी आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। ओके जी, तो आइए हम इस वेबसाइट के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो ये इसका होम पेज है, इस पर आप देखें वर्किंग फ्रॉम होम इज़ नॉट अ ड्रीम, वेलकम टू एकेडमिक राइटर जॉब्स। इसको आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। अगर आप डायरेक्टली यहाँ से अप्लाई के टैब बटन को प्रेस करोगे तो आप एक रजिस्ट्रेशन के फॉर्म पे पहुँच जाओगे। अभी हम इसको अप्लाई नहीं करने वाले, बल्कि इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल से इसको जान लेते हैं। इसमें फ्रीलांस एकेडमिक राइटिंग है, अर्न एज ए फ्रीलांस राइटर, बी वेल क्वालिफाइड टू जॉइन अस, वर्क फ्रॉम होम। ओके, आगे चल के हम इसको देखेंगे। इसमें राइटर जॉब, इसमें आप देखें कितनी डिफरेंट कैटेगरीज पे आप राइट करके बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। देखो जी, आवर राइटर जॉब्स, क्रिएटिव राइटिंग जॉब्स, यहाँ से आप क्लिक करोगे तो इसका नया पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर सकते हो। एडिटर राइटर जॉब्स अलग से हैं, ऑनलाइन राइटर जॉब्स और मैगजीन राइटर जॉब्स, ट्रैवल राइटर जॉब्स, इंजीनियरिंग राइटर जॉब्स। गोया कि देखो डिफरेंट निशेस पे डिफरेंट कैटेगरीज पे आप राइटिंग करके आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। ओके जी, इसमें साथ ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अभी साथ ही बेशक पढ़ लें। डू मॉडल आंसर्स हेल्प स्टूडेंट्स चीट, हाउ डू आई अर्न मनी एज ए फ्रीलांस राइटर। इसको आप ओपन करके अपनी मर्जी का जो भी क्वेश्चन हो जिसके बारे में आपको डिटेल जानना हो वो आप उसको पढ़ सकते हो। ओके जी, हाउ डू आई गेट पेड एज फ्रीलांस राइटर। You will have already found out from studying our pay rates that freelance writing on academic subjects is very well paid and can be a profitable route for earning additional money. However, in a business claiming to employ one of the most complete and superior groups of writing ability from around the globe, in what way can you excel above them all and earn great money? We offer you our best suggestions. Number one, apply now. Number two, once you have received your acceptance, you will have to provide proof of your identity and your qualifications and present them to our human resources division. The next stage is to go about upgrading yourself. All researchers commence as a D level writer. This quite simply refers to a fact that they can only undertake the lowest level of writing assignments, for example, only 2.2 undergraduate mock answer. There is not so much D level as there is work of higher level. In order to access more work, after you have been registered, write us an email and send it to info at the rate of academicwriterjobs.com requesting that your level be upgraded from D level to C level. Alternatively, you could request that you be uh, assessed for a much higher level if you possess a particularly high standard of professional qualifications as well as appropriate experience. The assignments that are of higher standard attract more remuneration once completed. What do you do once you have been given an upgrade? आप ग्रेजुअली अपग्रेडेशन के लिए बार बार उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ओके जी, what do you do once you have accepted a new project? What happens after your project has been handled in? Here are some more hints. You can read out the details. ओके, आप यहाँ से पूरी तफसीलात आप खुद पढ़ सकते हो। ओके, तो ये इसमें उसके FAQs थे। हाउ डू आई गेट राइटर जॉब, ये आपको राइटर जॉब मिलेगी कैसे, कैसे मिलती है, इसको भी आप पढ़ सकते हो डिटेल से ओपन करके। तो इस पर मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, थोड़ा सा इसका रिव्यू दे के आगे चलते हैं जी। वाई डू मैनी राइटर्स हैव प्रॉब्लम्स अट्रैक्टिंग jobs? The response is that they have failed to design a method that works for them. If you wish to write in a full-time capacity,
or just simply view writing as a secondary career, the most important thing to do is to formulate a method. You must have a structure to work from, as it will assist you to get jobs from far more easily. Michael Gerber states in The E-Myth Revisited that if you wish to be a success in any business, you require a model to ensure your business actually works. Thus, if you teach yourself how to work the system as shown below, it will turn into the base of your writer for success. Study the writer jobs market, take aim at your market, publicize yourself, getting testimonials, finding potential customers, how to aim at companies, the way to post your resume on internet job boards. Okay, you can get through the details and work accordingly. Okay, ये तो था उसका FAQ सेक्शन. इसमें आप डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर्स आप डिटेल से पढ़ सकते हो. हाउ मच डू फ्रीलांस राइटर अर्न? ये आपके काम की चीज़ है. इसमें फ्रीलांस राइटिंग जो बंदा करता है अर्निंग उसकी कितनी हो सकती है उसमें आप देख लें. नॉर्मली द नॉर्मल क्लाइंट ऑर्डर्स अबाउट 2500 to 3000 वर्ड्स, ये उसका ऑर्डर होता है. उसमें अर्निंग का एवरेज वी पे ऑन एवरेज £1500 per month for a part-time writer. This goes up to £6000 each month for a full-time writer. आप इमेजिन करें £1500 से लेके £6000 के दरमियान आप कितनी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो. ओके जी. अब यहाँ से डिटेल लिखिए. Studying the profiles of the freelance writers on our files has shown that around half undertake writing jobs as an addition to their current income. These writers can earn up to an average £1500 to £16,000 each month, which goes up to around £7,000 each month during the busy periods. About 25% of our freelance writers take on a brief for us, earning about £250 to £500 each month as an average. The final 25% approximately are writers taken on freelance writing as a full-time career option. These writers can earn about £3,000 to £6,000 each month, which goes up to about £7,000 each month throughout the busy times. Okay. कम से कम पार्ट टाइम करके बहुत थोड़ा जो इनिशियल न्यू बीस होते हैं, न्यू राइटर्स हैं, वो कम से कम 200 से 500 पाउंड्स तक, 250 से 250 पाउंड से लेके 500 पाउंड तक ईच मंथ वो भी अर्निंग कर सके पार्ट टाइम थोड़ा सा काम करके. लेकिन जिसको एज ए फुल टाइम जॉब अडॉप्ट करता है तो उसकी 3000 पाउंड से लेके 6000 पाउंड और कुछ राइटर्स कहता है 7000 पाउंड तक भी जा सकते हैं और जाते भी हैं. ओके जी. इसमें सिर्फ राइटिंग की कैटेगरी डिफरेंट वो भी आपको बताई. प्रूफ रीडिंग की जॉब्स भी आगे जाके हम देख लेते हैं. तो ये राइटिंग कैटेगरीज हैं. ओके, डिफरेंट कैटेगरीज में आप राइटिंग करके कितना अर्न कर सकते हो. ओके, और बिकमिंग अ राइटर, इसमें क्या ग्रेजुएट राइटर जॉब्स है, न्यू राइटर जॉब्स है, मेडिकल राइटर जॉब्स भी है, म्यूजिक राइटर जॉब्स भी है, माइक्रोसॉफ्ट राइटर वर्क, फ्रीलांस राइटर जॉब्स. ओके, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसको अप्लाई कर सकते हो अलग अलग कैटेगरी में. अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज में क्या है जी, आप इसमें देखिए लेक्चरर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हैं, टीचिंग जॉब्स हैं, ट्यूटर जॉब्स हैं, ऑनलाइन टीचिंग करके आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो, लीगल जॉब वैकेंसीज हैं, आईटी जॉब वैकेंसीज हैं, एजुकेशन जॉब वैकेंसीज. ओके जी. इसमें जिस पर भी आप चाहो इसको ओपन करके अपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करके अर्निंग करना शुरू कर सकते हो. ओके, इसकी डिटेल पढ़ लेना और यहाँ से आपने अप्लाई नाउ के बटन पे आप क्लिक करोगे तो सीधा रजिस्ट्रेशन के पेज पे पहुंच जाओगे. ओके, तो ये इसको हम ओपन करके देख लेते हैं. ये आपका रजिस्ट्रेशन का पेज है. इसमें इसी तरह पहले आपने अपने बारे में लिखना है थोड़ा सा अपने, उसके बाद आपका बैकग्राउंड, फिर एक्सपीरियंस और अदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है और नेक्स्ट स्टेप पे जाके अपनी पूरी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करोगे. ओके जी. बाकी वेबसाइट्स की तरह इसका भी वही तरीका है. तो अब हम पीछे चलते हैं. इसको फिर आगे एकेडमिक राइटिंग में कॉपी राइटिंग जॉब्स है इन ऑल सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट वाइज कॉपी राइटिंग जॉब्स भी हैं, टेक्निकल राइटिंग जॉब्स है इन ऑल सब्जेक्ट्स, आर्किटेक्ट राइटिंग जॉब्स, टेक्निकल राइटर जॉब्स, कंस्ट्रक्शन राइटर जॉब राइटिंग जॉब्स, ओके, क्रिमिनोलॉजी राइटिंग जॉब्स.
राइटिंग फ्रॉम होम, राइटर जॉब्स ब्रिटेन, writing jobs in the UK, writing jobs in California, writer job in Texas, writer jobs in the North, proofreading jobs. ओके, तो इसमें प्रूफ रीडिंग की जॉब भी अवेलेबल है, आप देख लें। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्वेश्चंस आप अच्छे से पढ़ लें, और राइटर बेनिफिट्स क्या है, व्हाट वी डू, जॉब वैकेंसीज, मैथमेटिक्स ग्रेजुएट जॉब्स अलग से हैं, वर्क फ्रॉम होम, वर्किंग फ्लेक्सिबल आवर्स, और राइटर केस स्टडीज। गोया कि आप डिफरेंट तरीकों से अर्निंग कर सकते हो, और डिफरेंट आप सब्जेक्ट्स पे बतौर मेडिकल राइटर जॉब्स, म्यूजिक राइटर, न्यू राइटर जॉब्स, और इसमें आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे आप कॉपी राइटिंग जॉब भी करके बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो इसको आप ओपन करके पढ़ लीजिएगा। बहुत बड़ी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक वेबसाइट है, गोया कि एक समंदर है। ओके जी, इस वेबसाइट का नाम क्या है जी? एकेडमिक राइटर जॉब, ये इसका लोगो है, इसको अच्छे से देख लें। आप लिखोगे academicwriterjobs.com या सिंपली इतने लिख लो एकेडमिक राइटर जॉब, तो ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसको आप डिटेल से खुद पढ़ लेंगे तो आपको और ज़्यादा अवेयरनेस मिल जाएगी। लेट्स मेक समथिंग ग्रेट टुगेदर, यहाँ से आप अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन के पेज पे पहुँच सकते हो। ओके, तो ये राइटिंग की डिफरेंट निशेज़ हैं, डिफरेंट आप उसके, और यहाँ से भी आप ओपन करके देख लें। एजुकेशन जॉब्स, राइटिंग प्रोजेक्ट्स, गोया के अलग अलग कैटेगरीज पे आप उसको काम करने को मिलेगा। डू यू पोजेस एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन एजुकेशन और एन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस, ये एकेडमिक राइटर्स के लिए है। फिर हम आगे चल के टीचिंग जॉब देख लेते हैं, और नीचे चलते हैं। इसमें जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, टीचिंग के लिए भी जॉब्स की कैटेगरीज अवेलेबल हैं। चले आगे जाके देखते हैं। इसमें ये रहा लेक्चरर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज, टीचिंग जॉब्स भी हैं। आप किसी को भी ओपन करके देख लें, डिटेल पढ़ें और अप्लाई करें। जॉब्स फॉर लीगल राइटर्स, ओके, एक दफ़ा बैक चलते हैं। मैं ओपन करना चाह रहा था टीचिंग जॉब्स। ओके, इसकी डिटेल हम थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। टीचिंग राइटर जॉब्स, freelance jobs for writers in all subjects areas apply now. We desperately need practicing and recent teachers and lecturers to take on board a variety of both teaching and one-to-one tutoring positions within their specialist area. We now have positions for teachers in all specialties and areas. Look to see what we do. Our customers will gain not just from your academic knowledge base and skills, but from your proven teaching ability as well. For your services, we provide the best pay rates for freelancers in this type of business, much better than the majority of teaching jobs. See our rates of pay. देखिए, इसमें आप इनके पहले पे रेट्स देख लें। आप वन टू वन टीचिंग करके भी बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, जिसमें अर्न थ्रू फ्रीलांस राइटिंग और वन टू वन टीचिंग, इसमें पे रेट्स आप देखिए उसी तरह से 1000 पाउंड से लेकर 3000, और फिर इससे आगे जाके आप 4000 पाउंड भी आप अर्न कर सकते हो। ओके, अप्लाई राइट नाउ, यहाँ से भी आप क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन के पेज पे पहुँच सकते हैं, और या फिर यहाँ से आप क्लिक करके सीधे रजिस्ट्रेशन के पेज पे पहुँच सकते हो, जहाँ पे आपको एकेडमिक राइटिंग की जॉब मिलेगी, और वन टू वन सब्जेक्ट वाइज आपने स्टूडेंट्स को टीच करके भी अर्निंग कर सकते हैं। ओके जी, तो इसमें आप खुद से बड़ी डिटेल से पढ़ सकते हो, और डिफरेंट कैटेगरीज पे आप काम करके बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। ओके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्वेश्चंस हैं, मेक यूज़ ऑफ योर डिग्री, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। फिर बेनिफिट्स क्या हैं, ये सारे डिटेल से आप पढ़ सकते हो, और यहाँ से भी आप सीधे अप्लाई नाउ के बटन को प्रेस करके रजिस्ट्रेशन के पेज पे पहुंच सकते हो, या सेपरेटली अपनी नीच के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो। एडिटर की जॉब चाहिए, ऑनलाइन राइटर्स, आप बतौर राइटर जो ऑनलाइन जॉब करना चाहते हो, या फिर आप इसमें प्रूफ रीडिंग की जॉब भी आपको अवेलेबल है, आप प्रूफ रीडिंग करके भी अर्निंग कर सकते हो। ये रहा प्रूफ रीडिंग जॉब, इसको हम ओपन करके देखते हैं। तो इसमें देखिए आपके सामने
फ्रीलांस प्रूफ रीडिंग का आ जाएगा जी। एकेडमिक राइटर जॉब्स प्रोवाइड द चांस फॉर academics to work on freelance proofreading jobs. Continue reading if you wish to discover more about this opening. What do proofreaders do? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका बेसिक क्या होता है, काम क्या होता है प्रूफ रीडर का? प्रूफ रीडर्स रीड written work along with adapting if necessary. A proofreader is able to carry out work on different uh, themes, including books, articles, translations, documents, as well as web content. Proofreaders are not the same as editors and copy editors. Proofreaders just care over the work, uh, while editors make the actual major changes to a piece of writing. Who makes of the services of proofreader? Normally, most of the people or groups that use the services of proofreader are newspapers, magazines, and publishers. How do you become a proofreader? आप proofreader बन कैसे सकते हो? Most people can tackle work as a proofreader, but it may be made more simple if you get a study guide. There are a few online study guides that are available on some internet sites. You can also use books on freelance editing and proofreading. What expertise is needed to be a proofreader? इसकी basic requirements क्या है? There is no requirement for a formal education or qualifications to be a proofreader. You must have कौन कौन सी चीज़ें required है? Number one, great attention to study detail, precision, a few IT skills, outstanding knowledge of English, including English grammar, basic composition skills, punctuation, and other basic ingredients of grammar. Okay, so you have the choice of undertaking a proofreading course, but what could be important is having some related experience, particularly if you are aiming to take on a position or project that specifically 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 in proofreading. Okay, this word is misspelled here. Are there really any proofreading jobs? There are a reasonable number of proofreading positions out there. However, competitions to get these positions is hard. Proofreaders who fit to the specific project's proofreading needs normally have an increased possibility of being offered the job. If you do acquire a job, you have the choice of working as a freelancer. Proofreading jobs as part of company's work team are comparatively rare. Will getting work as freelance proofreader in a self-employed capacity be of benefit to me? Self-employment offers particular gains and advantages. One typical one is having the adaptability of being able to control your day-to-day activities, but being in this position places you in a difficult position in relation to filing your tax returns on an annual basis. There are a few other disadvantages to self-employment. One is the deficiency of advantages that comes with employment, such as the provision of pensions, assistance when sick, and covered by medical insurance. There are several viewpoints on self-employment. Some of these are that only some people are able to exist working just on freelance writing and proofreading. If the intention is to be honest, it is suggested that these sort of jobs should only be seen only as an extra method for earning money. With the correct direction, the approved reading job in a freelance capacity can be very satisfying. ओके बाकी आप इसको पढ़ सकते हो, इसकी रजिस्ट्रेशन का तरीका। तो एनी हाउ आप ये इस वेबसाइट पे ना सिर्फ राइटिंग करके बल्कि प्रूफ रीडिंग और टीचिंग करके भी बहुत ज़्यादा अर्निंग आप कर सकते हो। ओके जी, तो ये थी आज की वीडियो। कल हम नेक्स्ट किसी वीडियो में डिफरेंट और ऐसे राइटिंग और टीचिंग की वेबसाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलेंगे तब नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।